Namaste bachcho, my name is Bhavani. I am working in Bharati Dasnag Matriculation Higher Secondary School as Hindi teacher. बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? मुझे लगता है कि everybody is fine. ठीक है बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्या सिखाने वाली हूँ? Today, what I am going to teach you. मैं आप लोगों को जो है प्रवीण पूर्वाद में से दक्षिणी कताएं मेरी पत्नी सिखाने वाली हूँ. सो व्हाट इज द मीनिंग? दक्षिणी कताएं. सो दक्षिणी कताएं का मतलब होता है साउथ इंडियन स्टोरीज. सो साउथ इंडियन स्टोरीज में से मेरी पत्नी व्हाट इज द मीनिंग? माय वाइफ. यस, हु हैज रिटन दिस? मेरी पत्नी जो है किन्होंने लिखा है? मुनि माणिक्यम नरसिम्हा राव जी ने लिखा है. ठीक है, अभी जो है देखते हैं. सो मेरी पत्नी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेरी पत्नी? माय वाइफ. अभी देखिए तो हम जो है मुनि माणिक्यम नरसिम्हा राव के बारे में जानेंगे. जस्ट वी विल सी अबाउट द मुनि माणिक्यम नरसिम्हा राव. कौन है यह जो है करीब इन्होंने 30 पुस्तकें प्रकाशित है. सो व्हाट इज द मीनिंग? करीब का मतलब होता है नियर अबाउट 30 का मतलब होता है 30 का मतलब होता है 30. THIRTY 30 पुस्तकें क्या मतलब होता है? बुक्स. BOOKS बुक्स. प्रकाशित का मतलब होता है पब्लिश्ड. सो यह जो है तेलुगु के बहुत ही फेमस प्रसिद्ध लेखककार है. उनके नियर अबाउट जो है 30 पुस्तकें जो है प्रकाशित हुआ है. कांतम कतलु पर तेलुगु भाषा समिति का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है. पुरस्कार का मतलब होता है अवार्ड. AWARD. सो अवार्ड. तो यह जो है कांतम कतलु इज मेरी पत्नी का तेलुगु में लिखा गया एक कहानी है. ठीक है, सो उनको जो है अवार्ड ऑल्सो गॉट. ही इज अ वेरी फेमस तेलुगु राइटर. पात्र का मतलब होता है कैरेक्टर्स. Who are the main characters in this story? Let's see. So who are the main characters? Muni Manikam Narasimha Rao, writer is the main character. बाद में जो है कांतम कौन है? राइटर की पत्नी. So writer wife is कांतम. प्रयागमा. Who is प्रयागमा? Prayagma is Kanta's friend. 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 Okay. The 3 persons are the main characters in this story. Writer, very main role. Kantam, wife of the writer, as well as Prayagma is the friend of Kanta. Let's see the story. What will happen? देखते हैं. Okay. लेखक means राइटर मछलीपट्टनम में रहते थे. Writer as well as Kanta both used to live in the village called मछलीपट्टनम. वे स्कूल में अध्यापक थे. अध्यापक
अध्यापक का मतलब होता है टीचर, TEACHER, टीचर। कांतम उनकी पत्नी थी। पत्नी, पत्नी का मतलब होता है वाइफ, WIFE, वाइफ। प्रयागमा कांतम की सहेली थी। सहेली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सहेली? सहेली का मतलब होता है फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। वह तपेदिक की बीमारी से पीड़ित थी। तपेदिक बीमारी, व्हाट इज द मीनिंग? सो तपेदिक का मतलब होता है ट्यूबरक्लोसिस, TUBERCLOSIS, tuberculosis. She was having a disease of tuberculosis. बाद में जो है राज महेंद्री के सैनिटोरियम में उनकी चिकित्सा हो रही थी। चिकित्सा, चिकित्सा का मतलब होता है ट्रीटमेंट, TREATMENT, treatment. Now let the story begin. Writer as well as Kanta was living in the village called Machilipatnam. Now what was happened? Kantam friend, the friend name is Prayag Mas. She was taking the treatment of tuberculosis. Now Kantam want to see his friend. So now she is saying that I want to see my friend. Now they are deciding. What they are deciding? If writer as well as Kantam both will go and see his friend, means there will be a more kharcha. Kharcha ka matlab more money has to spend. So now the writer is saying that, okay, Kantam, if we both go together go means what will happen? There will be a more expense. So now the Kantam is saying to the writer, just you only go and just see my friend and come. Okay, now they are deciding. Now they are deciding that okay, writer only just go and see the Kantam friend. Who is the friend? कौन है कांतम की सहेली? कांतम की सहेली का नाम है प्रयाग माँ। ठीक है, अभी जो है राइटर जो है अभी कहां पर जाते हैं? ही इज जस्ट गोइंग टू राज महेंद्री स्टेशन बिकॉज द फ्रेंड डिजीज वॉज treatment was going on. It was राज महेंद्री स्टेशन में जो है उनकी सहेली का चिकित्सा जो है हो रहा था, सैनिटोरियम में हो रहा था. He reached this station. Now writer is little bit कंजूस. कंजूस means miser. Now to reach the sanatorium, it's near about 2 kilometers. Now writer is thinking that if I take any vehicle, so what will happen? So it will take more money. So now he is thinking that okay, what I will do? I will just walk and go. Now writer was holding the bag, luggage. His wife Kantam, before coming to the station, Kantam so many times she was saying, Kantam जो है बहुत बार कह रही थी कि वह जो है अपने बैग का संभाल के रखे. ठीक है, सो अपने बैटिंग जो है संभाल कर रखे. द कांतम वाज सेइंग टू द राइटर सो मेनी टाइम्स, जस्ट टेक केयर ऑफ द लगेज, टेक केयर ऑफ द लगेज. ठीक है, सो अभी जो है राइटर जो है he reached the station, he saw his friend, then within one day he returned back to Machilipatnam. Now what happened? But the bag was not there, the luggage was not there. The Kantam was asking, what happened?
friend, where is the luggage? Now the writer is saying the story. What happened to that luggage? How he missed the luggage. ठीक है? Now let's see the now he is just narrating the story how he has missed the luggage. He just went to Bhimvarapuram when he now want to return back to the Machilipattanam. Now he is just going to the Bhimvarapuram. Now to reach Machilipattanam, he was taking a ticket. That ticket master said that if you go to Kekulur, if you just go to the Kekulur, after from the Kekulur station, if you take the ticket and go to the Machilipattanam, again you can save the money. जो है स्टेशन मास्टर ने कहा कि अगर तुम भीमवरमपुरम से सीधा मछलीपट्टनम जाओगे तो एक्सपेंस विल बी मोर. जस्ट गो टू केकलूर स्टेशन and after that you can just go to the Machilipattanam, then you can save the money. The writer is as usual, he is confused. He said that okay, I will just go to Kekulur and after that I will just go to the Machilipattanam. Okay, he was just sitting on the train. That time what was happened? उनका जो है बटुआ का मतलब होता है पर्स मिस हो गया. सो पर्स मिस होने के कारण वहां पर जो है यात्री यानी कि one passenger was sitting on the train. So he said to the writer, okay, I will take care of your luggage, just go and search the purse. राइटर जो है पर्स को ढूंढने के लिए उस लगेज को जो है स्टेशन में ही रख के चले गए. जाके पर्स ढूंढा. So what happened? He didn't get the purse. When he returned back, he found that the train has just went away, has arrived. So now writer has missed. क्या किया? उन्होंने जो है अपना लगेज भी मिस कर दिया. अब जो है अपना बटिया भी मिस हो गया. Now writer has missed purse as well as the उन्होंने अपना लगेज भी मिस हो गया. Now he is having only, he just took only 25 रुपया. When he just came from the home, he just took only 25 rupees and came. He was so confused. He was just very confused in spending all the money. So finally what happened? Now he was having only some less amount. Just कितना सा 4 आना था उनके पास. Now he don't have any money to return back to the Machilipattanam. So now what he is doing? Writer जो है कहाँ पर गए? गुड़ीवाड़ा जाकर मित्र से रुपये उधार का मतलब होता है borrow. Now writer what is doing? He just went to the Gudivada is a place. His friend lives in the Gudivada. Now he just went to his friend place Gudivada and after that उधार का मतलब होता है he borrowed some money from his friend. Somehow he reached to the मछलीपट्टनम. ठीक है, मछलीपट्टनम जाके पहुंच गए. But now what happened? He has missed the luggage. बिल्कुल राइटर ने जो है वह लगेज को बिल्कुल मिस कर दिया. Now writer thought that definitely he will get the luggage. So next day what was happened? So next day क्या हुआ कि चलो अभी देखते हैं अगला दिन क्या हुआ. वन कूली का मतलब होता है वन कॉब. व्हाट ही डिड? जस्ट कूली जो है अपना क्या बोलते उनका लगेज और चिट्ठी मीन्स लेटर. ही जस्ट ब्रिंगिंग द लगेज एज वेल एज लेटर and just hand overing to the luggage to writer. Kantam, she is fine. She is very happy to see the luggage. लगेज को देख के वो बहुत खुश होती है. उसने जो है लगेज खोला. So what she found? She thought that one sari was there in that luggage.
नाउ कांता, वह जो है शक, शक का मतलब होता है न उन्होंने जो है अपनी पत्नी, पति के ऊपर जो है शक करती है, she has a doubt. How in this luggage one sari can be inside? Now she is doing a doubt on his husband. As usual, she's getting angry. So that time itself, what happened? One man, he just came there and he said to the कांता, वह जो है एक आदमी जो है वहां पर आकर कांता से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि by mistake my daughter, she thought that this luggage is that girl luggage, she thought that this is my luggage and she kept sari on that luggage. Actually by mistake my daughter has kept the sari as well as choli. So यहाँ पर जो है, यहाँ पर रखने के कारण just give back the sari. Now Kanta, what she is doing? She is just taking the sari and just giving to that man. Now this is a very humorous story. Okay. Now as usual, all the women what they will do, अपने पतियों पर किस तरह से शक करती है, वही इस कहानी में एक हास्य, हास्य का मतलब होता है humorous. In the humorous way they have narrated the story. After that what happened? कांता जो है बहुत ही क्या होती है, कांता जो है बहुत ही, उसको बहुत बुरा लगता है कि उसने अपने पति पर शक किया. She feel very bad that what is that, उन्होंने अपने पति पर जो है शक किया. So it's a humorous story. ठीक है बच्चों. So यहाँ पर शब्दार्थ, कहानी, स्टोरी, चिकित्सा, ट्रीटमेंट, चिट्ठी, लेटर, 25 रुपया, 25 रुपीज, गुम, मिसिंग, ख्याल, केयर. ओके, ठीक है. You must have understood this story. It's a humorous story. Okay. In the description we have attached the study material, question bank as well as question paper. If you have any doubt, go to the study material. After that you will be clear in this story. Just if you are clear, take the question paper, write a test. Okay. Thank you.